Hello everyone, you are welcome back to our YouTube channel, and in this video I am going to tell you about a very interesting and the new position which has been released at the US Embassy. Okay, so I would request you to please watch this video till the end so that each and information that I am gonna provide about you regarding this position you can understand it properly, and if you meet the eligibility criteria then I would also advise you to please apply for this पोजीशन. तो चलिए शुरू करते हैं. तो ये जो पोजीशन है ये यूएस एम्बेसी में निकली हुई है, एज आई हैव मैंशनड यू बिफोर. एंड जो इस पोजीशन का नाम है ये है काउंसलर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. ठीक, तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी मांगी गई है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए. ठीक, तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि आपकी ग्रेजुएशन कि एटलीस्ट आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए. इफ़ यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, इफ़ योर रिजल्ट इज़ अवेटेड, देन इन दैट केस योर एप्लीकेशन वॉन्ट बी कंसिडर्ड. ओके, सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन. And now we come to the experience part. So as you completed your graduation and you must also have the 3 years of experience in the counselor department. तो 3 साल का काउंसलर डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए. अब ये काउंसलर डिपार्टमेंट किस चीज़ में, मतलब काउंसलिंग किस चीज़ में, काउंसलिंग वीज़ा लाइन में. ठीक, visa counselor, as a visa counselor if you have worked since the 3 years, at least 3 years. ठीक, at least 3 years यानी कम से कम 3 साल आपने काम किया हो. उससे ज़्यादा भी आराम से चल जाएगा लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए. तो 3 साल का अगर आपको काउंसलर डिपार्टमेंट में एज अ काउंसलर एक्सपीरियंस है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन. ठीक, और उसके बाद में आपने क्या हुआ कि जैसे काउंसलर होते हैं तो काउंसलर में एज अ जो एक फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होते हैं उनका भी मतलब उस पूरे 3 ईयर में आपने वो काम भी किया हो एज अ फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर. ठीक है, तो वो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कई लोग होते हैं वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, सो दे अटैच द फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स. तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कि कौन से डॉक्यूमेंट्स है, मतलब वो डॉक्यूमेंट कोई फेक तो नहीं है. उसकी इंक्वायरी करने पड़ जाए आपको कि उन्होंने किसी कंपनी के बारे में मेंशन किया, तो आपको कभी कभी जो ऑफिसर होते हैं वो एम्बेसी से जाना भी उन्हें पड़ता है उस ऑफिस को चेक करने के लिए कि मतलब रियली वो ऑफिस वहाँ एग्जिस्ट करता है कि नहीं. और जो एम्प्लॉई जो है, मान लो वो एम्प्लॉई है किसी कंपनी का, तो वहाँ पर उसकी वेरिफिकेशन के लिए कि इज़ ही रियली द एम्प्लॉई ऑफ दैट कंपनी और इट इज़ जस्ट फ्रॉड. ओके, सो in order to confirm all the information regarding the visa procedure, whatever information he has provided, if you want to confirm, then in that case all that work is done by the investigating officer. So that is the position regarding, and you will be joining over there the fraud investigating team under the counselor department. So that's why they are asking for the 3 years work experience as a visa counselor. So this is about the education qualification and also the experience. And apart from that, if we talk about the language proficiency, so they are just demanding you the command over the English communication skill, and the second thing is you must also have the command over the regional languages. Okay, regional languages like Hindi or Marathi, so that kind of regional languages if you have the command over, and also consider your English, so then you are properly eligible for this position. And I will provide you the link in the description box, and it is free of cost. You can apply directly through that link. When you click on that link, then you will be directed to the main page of that profile. You can go through about the profile responsibility on that page, and also at the very top you will find the option of the apply. So just simply click on the apply, and if you are new then you need to create the ID, and after that you will come to the application. Okay, then you will start filling up the form. And if you have already applied for some of the positions in the US Embassy, then you don't need to create the ID again. The same ID will work for you. Okay, so from that login ID you can start filling up the form, and after the submission of the form you will receive an confirmation email from the side of the US Embassy, and that will be regarding that your form has been successfully submitted. And any other further information regarding your written test or the interview round, you will be intimated via email. Okay, or they can contact you by
mean on your calling number as well. So that's the information that is briefly I have told you about, and the link that I will provide you, you can go through there by yourself as well. So thank you very much for watching this video, and if this video is anyway helpful for you, then don't forget to subscribe the channel. If you are the already subscriber to mean my YouTube channel, then also I would request you to share this video to your friends circle or in any of the group whosoever are demanding to get a relevant job. So thank you very much and have a nice day. Hope you are doing well and keep on doing the well.